And bringing you a breaking development, India gets its 51st Chief Justice today. Justice Sanjiv Khanna is taking oath as we speak. Let's listen. Now, essentially, this is the official ceremony where we are seeing the new Chief Justice of India, Sanjiv Khanna, swear in. President Droupadi Murmu is administering the oath of office. This is taking place at the Rashtrapati Bhavan. Remember, Justice Khanna essentially succeeds Justice DY Chandrachud, who had officially retired yesterday itself on the 10th. His last working day was on Friday. Now, Justice Sanjiv Khanna's term will be lasting until next year, May 13th. The centre had officially notified of Justice Khanna's appointment earlier this year in October, following Chief Justice Chandrachud's recommendation on October 16th. As we mentioned, Friday was the last working day of the former Justice Chandrachud as the CJI. He was given a rousing farewell by the judges, including, of course, the new Chief Justice of India, Sanjiv Khanna. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना I, Sanjiv Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. Actually been sworn in, been administered the oath by the president. He is now India's 51st Chief Justice of India. He's essentially served the Supreme Court since 2019 and has been part of several landmark judgments as well. Now, some of those landmark judgments that he has been a part of include upholding the sanctity of EVMs, scrapping the electoral bond scheme, also upholding the abrogation of Article 370, and the granting of interim bail to the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. He had been elevated as a judge of the Supreme Court on January 18th, 2019, and he's the third-generation lawyer. President Droupadi Murmu has administered the oath of office. This has taken place at the Rashtrapati Bhavan. You can see many are in attendance, including the Prime Minister, the Defence Minister, the former Chief Justice of India, DY Chandrachud, who had recommended Justice Sanjiv Khanna's name as well back in October, is present. Now, importantly,
Justice Sanjiv Khanna's term will last until May 13th, 2025. He has served as a Supreme Court judge since January 2019 and has also been part of several landmark judgments. Now, some of those judgments include upholding the sanctity of EVMs, upholding the abrogation of Article 370, the granting of interim bail to the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, and scrapping the electoral bond scheme. He is a third-generation judge. India has officially gotten its 51st Chief Justice of India, Sanjiv Khanna. His term will go on until May 2025. He was recommended by the former Chief Justice of India, DY Chandrachud, back in October. That is when the centre had also given its recommendation. Now, as we mentioned, among the notable judgments of Justice Sanjiv Khanna in the Supreme Court itself is the upholding of the use of EVMs during the elections. Key statements made by him were that the devices were secure and had eliminated booth capturing and bogus voting. We're crossing over to my colleague Gaurav to get us more on the significance here, where India gets its 51st Chief Justice today. Gaurav ji, हमने अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी हमारे व्यूअर्स को दिखाया है. आप जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में और डिटेल्स दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना ने आज जो है देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और उनका जो कार्यकाल है वो सीनियरिटी के हिसाब से, क्योंकि वो चीफ जस्टिस होते हैं यहाँ पर, तो 13 मई 2025 तक उनका कार्यकाल रहेगा। और आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश जो थे DY चंद्रचूड़, उनकी सिफारिश के बाद जो है केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति की घोषणा जो है वो अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर की थी। और जस्टिस संजीव खन्ना की बात करें तो जनवरी 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है वहां पर उनको एलिवेट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे थे। और अगर महत्वपूर्ण अभी तक के जजमेंट की बात करें तो दिल्ली शराब नीति का जो कथित तौर पर घोटाला हुआ, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया हो या फिर इसके अलावा संजय सिंह, तमाम लोगों को जमानत जो है उन्होंने यहाँ से दी थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को बरकरार रखने का मामला हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से, इन सब सारे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्से जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उसको लेकर जब पिटीशन आई थी तो उस वक्त उन्होंने अपने फैसले में सरकार के उस फैसले का जो है वो समर्थन किया गया था। और इस फैसले के बाद जो है जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, वो हट गया था। तो ऐसे तमाम सारे जो है वो फैसले जो है वो संजीव खन्ना ने दिए हैं। उन्होंने वो एडवोकेट भी रहे हैं और इसके अलावा वो हाई कोर्ट के जजेस रहे। कई हजार जजमेंट जो है उन्होंने हाई कोर्ट में दिए, ऑर्डर दिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और अब चूंकि वो नए चीफ जस्टिस के नाते मास्टर ऑफ रोस्टर भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे में उनके पास अपने कार्यकाल में तमाम महत्वपूर्ण जजमेंट जो है वो देने हैं और कई नई बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करना है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 7 जजेस का जो ऑर्डर आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि नई 3 जजों की जो बेंच है वो तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बरकरार रहेगा या नहीं। ऐसे में देखा जाए तो जस्टिस संजीव खन्ना को, चूंकि वो चीफ जस्टिस हो चुके हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर, उन्हें नई बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। और कई सारे ऐसे मामले हैं, संवैधानिक पीठ के हों चाहे महत्वपूर्ण मामले हों, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। और इसके अलावा बतौर चीफ जस्टिस जो है वो उस कोलिजियम को भी हेड करेंगे जो कि देश भर में चाहे हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हो या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति हो, उसका फैसला जो है वो करती है, उसकी सिफारिश करती है। तो कुल मिलाकर जितना भी कार्यकाल अगर आप देखें, तकरीबन 6 महीने का कार्यकाल जो जस्टिस संजीव खन्ना का रहने वाला है वो काफी ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ और तमाम सारे आदेश जो है उनको अपने इस कार्यकाल में देने और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर
सुनवाई भी होगी। अगर देखा जाए तो चाहे वो शिवसेना विवाद हो, चाहे वो अगर आप खास करके कहें तो जो मथुरा जन्मभूमि का मामला चल रहा था वो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच पर ही था, उस मामले में भी अभी जो है बहुत सारी सुनवाई बाकी है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे और बहुत सारी जमानतों को लेकर जिस तरीके से चर्चा होती रही, चाहे वो उमर खालिद की जमानत हो या ऐसे कई मामले, उन सभी को भी जस्टिस संजय खन्ना के कार्यकाल में जाहिर तौर पर सुनवाई की मांग की जाएगी। लेकिन अब से थोड़ी देर में जस्टिस संजीव खन्ना जो है आज वो अपने कोर्ट नंबर 1 यानी कि मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे और तकरीबन 40 से ज्यादा मामले उनकी कोर्ट में आज लिस्टेड हैं। और आम दिनों की तरह ही जस्टिस संजीव खन्ना जो है अपने कोर्ट में बैठकर एज ए चीफ जस्टिस जो है वो जाहिर तौर पर सुनवाई करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो इंडियन जुडिशरी में जोड़ने जा रहा है, जब 51वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि एक पेशेवर वकील है और उसके बाद वो हाई कोर्ट में जज बने, दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसके बाद उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हुआ और आज वो चीफ जस्टिस के मुकाम तक पहुंचे हैं। फिलहाल आज से वो देश की न्याय व्यवस्था के मुख्य जो है वो मुखिया होंगे और वो देश की अदालतों में जो पिछले कुछ सालों में, पिछले 2 सालों में तकरीबन जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो सुधार के कार्यक्रम किए गए, चाहे वो न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने की कोशिश हो, चाहे ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश हो, या ई-कोर्ट्स का मामला हो, या इसके अलावा जिस तरीके से पेपरलेस किया गया कोर्ट्स को। All right, Gaurav ji, thank you so much for joining us and telling us much more about how significant the judgments have been in the past when we talk about Justice Sanjeev Khanna's involvement in them, what the important cases are going to be coming ahead and looking ahead as well. We'll continue to track the developments in the top court now that there is a new Chief Justice of India, the 51st, Sanjeev Khanna.